Hello guys, and welcome to the stream. And today I'm going to cover some DSA questions based on recursion. I definitely suck at it, but I'm going to give my best of best, and I'm going to try some questions. Let's go. So the first question is recursive implementation of ATOI. ATOI? I definitely don't understand what does that mean, but let's see what it is. And here's the question on lead code. So string to integer ATOI. ATOI. So it's a medium level question, and implement the my ATOI string as function, which converts a string to a 32-bit signed integer. A string to a 32-bit signed integer. Okay, the algorithm is as follows. White space, ignore any leading white space. Done. Sinus determined by sign by checking if the next character is minus or plus. Got it. Assuming positivity if neither present. Okay. Conversion, read the integer by skipping leading zeros until a non-digit character is encountered or the end of the string is reached. If no digits were read, then the result is 0. Okay. Rounding, if the integer is out of 32-bit signed integer, then round the integer to the remaining in the range, specifically integers less than minus 231, which should be rounded to minus 231, and integer greater than should be rounded to whatever this is. Return the integer as final result. So let's take a look at some examples. The output is minus 42. That makes sense. If we add this, no character rate because there is no leading white space. Yeah, I'm going to use C++ for this because I believe I can do this in C++ much better than any other language. No character. There's neither plus or minus, so it's going to be minus. Wait. Example 4, 0 minus 1. So we are giving the output 0. Why is that? 0 minus 1, no character rate because there is no leading white space. No character reads. No character reads because there is neither a minus nor a plus. So what is this? The string is from because the net character is non-digit. Because there is neither. So we need to read up to the non-digit character. The last digit, I would say. I need to read it again. Ignore any leading white space. Ignored. Checking if the character is minus plus, assuming it's nothing plus. Read the integer by skipping leading zeros until a non-digit character is encountered or the end of the string is reached. If no digits were read, then the result is 0. Good. Now the last thing is rounding. If the integer is out of just a second. Yeah.
So the last thing is rounding in the integer. If the integer is, I don't need this. So you can just start simply traversing the string, which is we need a result string. Do we need a result string? No, I can just typecast it. I'm just going to store my answer in this string, which will be string result string. So I'm going to run a loop, which will be carry string. Hello Chandu, hello. So I'm going to run this for loop. I will just go with the normal loop as less than s of length, which will be wait. It's a no. I cannot just go with the for loop. This question is for recursion. Oops. So I'm going to make a function which is going to return the result. Yeah, I'm just going to return a result string. It is string and recursion. This will be, so what I need is simply a string and we also need a result string result. ReadGear. And what is the next thing that I need? I guess I also need to yeah, I need to pass the index also, which will be int I dx. So if I'm going to start my code, I need a result string. Yeah, and I'm going to call this function, which will be str, and the things that I'm passing is s and result. Do we need to pass this string result? I can just directly pass this, and after this I need an index, which will be 0. Hello, mic check. Yeah, good. So we're going to pass this, and we have an index. I'm going to skip if it is a white space. The first thing that I'm going to check is this: if the string index is equal to a white space character, a white space is equal to equal to. So what I'm going to do this is skip it. If it is not equal to white space, if I'm going to skip it, it's not equal to white space. If it is not equal to white space, then I'm going to
pass. Which is not a white space. Then what I'm going to do is check until the number is. So what will be the result of 0? We are also going to ignore these zeros. First we need to check if there is any. We are going to include any white space. Excluding white space. The rule number 1 is to check white space. Second is to check the sign value. The third is to check if it is a digit. And the fourth thing, yeah, this question is weird. It's not weird if I try to solve this without recursion, but with recursion it is a bit weird because I'm not very good at recursion. I just suck at it. Is digit. How do I skip this thing in if I'm trying recursion? I'm just going to go with str. I'm going to call s, then we have res, then we have index, which will be 0 plus 1. No, idx plus 1. If I go inside this, I'm going to get index 1, then 2, then 3, then 4. But if the index 0 is white space, I need to skip this not equal to white space. I'm just going to skip. Yeah, I'm just going to skip. Now inside is skipping it. Result will be the same. Result will not change. I think only start recursion when you reach actual digits. I think you are right. I can, before starting recursion, I can just skip those white space while yes while okay, int I is equal to 0. I'm just going to pass the I, while the si is equal to the space. While it is empty space, I'm just going to continue. I have nothing to do. Not continue, but I plus plus. So if we have I plus plus, it will be 1. This one is not equal to 1. 1 is the correct answer, and it will be passed down here. So the first thing is done. It is done. Now the second thing is the sign value. This sign value. So the first thing can be a character.
did we have? Two characters. Till. I'm going to return if the SI is not equal to is digit. Also, I need to check for the first character. If it is minus or plus, no characters. So I can do this later. If it is digit, then we're going to return, simply return with nothing. Or do we need to return this? I can just keep it void. I don't need to return anything. String, which will be my result string. Which will be my result string. Just empty for now. Result string. I'm going to pass it by reference result. So we have result here. We have index. Do we need to manipulate index? No, we don't. Return. We also need to manipulate. It's not a digit. It is not a digit. But if it is a digit, then we are going to add it inside our result string, which will be plus equal to SI. If I return this by typecasting, it will be int and result. I hope this works, but I'm not sure. SI IDX is digit. It will be IDX. My bad. IDX index. Still have some error. Is digit. Expected this. You expected this. One more. No variable conversion, S3 to string. Now what is wrong?
just need to pass string. I'm not sure about this, but okay, it's digit. I'm checking who is digit only. I also need to check to length. I guess I need to pass the length of the string also. Len, which will be just like length. Or I can simply check it here. Or just of length -1 when up till IDX is smaller than or equal to. But I don't think it is going, it will go out of bounds. Now we have some issue. Expected expression. Expected expression typecasting. In C++. Typecasting string to int. Okay, we have, so we can do stoi. This is not a good idea. So we have this invalid argument. Why is that? Why a invalid argument? Let's return 0 and I will try to print std cout, which is our yes. Output is 0 expected. Where is my std cout? Where is my print value? I don't get it. Here is my print value. This cout value is empty. We haven't added anything. My bad. We need to use we need to pass this string. S plus equal to IDX. S plus equal to
while we are calling this, will be the function values. So the first one that I want to check is string, and the second one is result string, which is always be empty. And we have I will be 0. 4 to 0. Yeah, that was what I expect. Come on, come on, come on. What is the mistake that I'm doing? Because I'm not able to manipulate that string of mine. String. If I'm passing a string, I simply pass the string. We have and str plus modified. This is the correct approach. Pass res. We have res. So plus equal to recursion. It should not be small, but it should be big. If it is string length -1 is the valid one, and index is greater than that is invalid. So we need to return. I hope this is going to work.
Still no answer. We have plus equal to IDX, string IDX, string S IDX. Manipulating this, passing down. I just need to manipulate this. Why is this not working? We still do not have anything in value. How many times my function is even running, which will be steady. The out has IDX. So it will be the first value that is going to print. It will be the first one. Status TV and Dell. Oops, did I submit? My bad. So we have 4. We have 4. The issue is inside this one. The S4 is a is digit. Yeah, it's true. Oops, oops, oops. It should be not a digit. So I'm getting the value, which is correct. So the first one is exception 1337. I'm getting all these values now. 0 0 0 value 0, which is correct. Values worse, and whatever this is, it is correct. I'm going to add my own test case. I want to make it 0 0 space, not space but space ABCD. I will do this minus 10. What is going to be the value? So in the third case we need 0 and the expected output is 0. Okay. So we need to increment it. One more check before recursion. We can add one more check. It will be if the current SI is going to be a minus, or SI is going to be which will be equal to plus, if it is one of these things, true or not. I'm just going to use a flag. It will be boolean positive, will be true by default.
But this if the condition is minus minus, then it will be true. Then we are going to set the false equal to false, false as false, else if false equal to false as it is, and psi equal to, it will be the positive one, and position as false. So I'm just going to write it. It will be true. Also, we need to increment the I plus plus and I plus plus. Yeah, we need this. So if it is a digit, then none of this condition is going to run, which is good, which is good. So we have this. I can return the value. I'm not directly going to return it. It will be return 0. It will be a new value, int n, which will be my new value. Value. So I'm just going to remove this one. I don't need this. This much is enough. So if it works, all good. Invalid argument. Why is that? Why is that? Why invalid argument? Open test case. Last executed input. We have this. We have this. If it is 0. Okay, if it is going to be an empty string, then it's going to cause some issue. We cannot have an empty string. This is not equal to this, then only we are going to do this step. We do this,
Also, I'm going to return from this side. Return will be n into false. If it is true, which will be, then we are going to return n simply. Else we are going to return n into -1. I hope there is no syntax error. There is one syntax error. Expected expression. What is wrong with this one? I cannot use this. I can only have these in last semicolon, and I hope it will be done. Yeah. So I can just try submitting this. Only 6 out of 1096 test case. What is wrong with this? Out of range. Out of throwing an instance of STD. Out of range. Out of range. Okay. We also need to, the thing that we need to, got it. I missed my fourth point, which was to rounding off. So for rounding, first of all, the answer that I am having is correct. But the last thing that is creating issue is the rounding off. Is out of today which sign integer range. Okay. Less than the integer is out of 30.
UI is breaking up on minimum and maximum limit. Hi Karun. So enough your logic is correct. I just cannot do this right now because the N can be bigger. Why and how to handle an infringe? Is there any way checking in limits in STUI? STOL. Can we do this? STOL using larger data type. Use STD form charts. Cache the exception. String y STO. Phone gets aborted. I execute this as the int. How do I check the bound before I store it? Yes, exactly. Try STOY catch. Version could be performed. If out of range, value would fall out of range of the result type. STRTOL. So we need to use try catch. Is there any better way? Any better way of doing this? Or try catch? It's invalid argument if it is not. Catalog is digits and space plus minus and dot. We can ignore dot and do we need try catch? Then we have STOL. STROL plus. You are likely looking for STOL. Yes, STOLL. It's standard. One is then we need to convert the long into integer. To convert long into int, we
need to do some kind of mode static cast int. Long big num. Static cast int. The standard C+ way to perform explicit type conversion. As the compiler, you are internally narrowing the data. Implicit conversion, you can automatically handle the conversion, but it may issue a warning about potential data loss. So I'm going to try this static cast. If then we are going to have a long and then stoll. Also I can do this thing later, but we have n, and then we are going to do n int result equal to static cast, which will be int, and we have a n. We can return result. Let's check if I don't get any kind of syntax error or anything. Oh, semicolon. Okay, I'm getting the answers. The only thing that I need to pass is where is that? It will be pause. If pause, then we are going to return mark result. If it's not, we are going to result into -1. It should do the job. What if I try to submit now? Output 108. This time it's different. I will remove my first case. One Fuson. Flow. Okay. So we directly need to return the if the n is greater than. Okay. We don't even need to convert, I guess. Now we can convert, but if the result is greater than int max,
we need to return result. No, it will be int max that I'm going to return. And the second thing, I'm going to do the same with the minimum value. It will be int minimum I hope this is going to work, but it didn't. Return result smaller than, my bad. Smaller than. Still not good. Why? Okay, we are doing static. My bad. We should not try to convert it. We can directly check in. Only going to convert it when you need it. Else something is wrong. Expected this. If the integer is smaller than int min, am I returning it wrong? N is greater. Out of 1 integer plus 2 minus intender. Round the trigger remaining range. Should be rounded to. It's greater than int max. We need to return int max. I don't get this one. It's greater than int max. Okay, we need to check that minus plus. My bad. Position. Boolean equal to position. If position is true, then we are going to return this, else n into -1, which is the correct way, and we are simply going to return the result. I can directly return this static. This should work. Still have an issue in a test case, which is 20000. Out of range even for long. Okay, then what I can do is I can put a limit on the also check
Also check if the dot length is not greater than how many characters? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Not greater than 10. It can be at max 99999, but it cannot be greater than that. It should work. It should work for sure. It works. Now I expect it to solve all these 1000 test cases. Okay, very good. We should not store zeros. We need to skip zeros. Only trailing zeros. Only trailing zeros. Mm. Also, this is not a correct way. Zero. 11 is 0. I'm just going to store 1 0. No, I can do it only with the 10 values. SU is not equal to only this much. If it is not 0, then only we are going to store this. If the S0 I can add 1 0. This is not a good way. This is definitely not a good way. Trying to find some kind of better way. Wrong answer, wrong answer.
smaller than. It's greater than 11. Only going to add zeros. If the S0 if S is not in the empty, no, it is not going to work. I'm getting confused now. Only the issue is with these big values which are in trailing zeros. So this is doing fine. When we're going in recursion, we have these zero trailing zeros. Do I also need to check for zeros? Okay, I'm just going to add if res 0 equal to and the SIDX is also 0. Res 0, FIDX is also 0. Zero, then I'm just going to do the pop back. Just to pop back. Is that going to work? Steady out of range. Length is greater than 11. Okay, the question is done, but the quality of code is absolute garbage.
what what are good things that I can do? No recursion. Clamp the result into int min or max to handle overflow. That's what I did, but solution looks shit. Big of one space inside C++ solution. Let's check what this guy did. What? Only this? My UD int I. Okay, while let's say I plus plus. Okay, okay. Int sign 1. If si minus or plus. Same thing what I did. It is same thing. He just wrote it in a better way, in a smaller way. Okay, we have, I'm using a boolean flag, he's using a normal integer. Same thing. It's nearly same, no issue. क्या कहा? बीटेक में, बीटेक थर्ड ईयर में हिस्ट्री का एग्जाम है भाई। कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो पहले तो ये बताओ। रिजल्ट। जिसने ये चीज वाइल लूप में की है, मैंने किसके लिए रिकर्जन फंक्शन बना दिया है। कुछ और अच्छी चीज की है। ट्रेडिशन एंड नॉलेज। सब तुम्हारा तो खतरनाक ही सीन चल रहा है। एसेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशन एंड नॉलेज। सीरियसली इसकी जरूरत थर्ड ईयर में, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ाते तो मैं एक बार को मान लेता, पता है। फर्स्ट ईयर में फिर भी सेंस बनाते हैं कि हाँ फर्स्ट ईयर में सब 11वीं 12वीं का पढ़ा देते हैं बच्चों को। थर्ड ईयर में ना, ना भाई ना। गलत कर रहे हैं तुम्हारे कॉलेज वाले, प्लेसमेंट से ध्यान भटका रहे हैं तुम्हारा, और कुछ नहीं, हिस्ट्री में लगा के। कोई बात नहीं भाई, अब पढ़ो तुम, हिस्ट्री पढ़ो। सी प्लस प्लस ये सब बाद में काम आएगी, पहले ये सब पढ़ो। लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर कॉलेज। सही बात है। साइज एंड डिजिट। smaller than start size. Oh, तेरी। Can we use dot size with string in C++?
Okay, length and size दोनों identical to length. There is no functional difference. Interchangeably. Okay. So we can use both. So अभी तक और भी एग्ज़ाम हुए हैं तुम्हारे, या अभी सबसे पहले ही यही एग्ज़ाम है? If leading space, then skip. If non-digit or end of the string, then break. Otherwise, digit. हो तो गया ये क्वेश्चन, तो मैं रिकर्जन से करके देख रहा था, लेकिन इसमें रिकर्जन फालतू का है यार। मैं ये स्ट्राइवर वाली शीट कर रहा था ना, तो इसमें रिकर्जन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एटीओ। एक मिनट, स्ट्रिंग टू इंटीजर एटीओ। यार ये तो नाम तो अलग है इनका, फिर मुझसे क्यों करा दिया इसने फालतू में। जो रिकर्जन का क्वेश्चन नहीं था उसमें रिकर्जन ज़बरदस्ती लगाया, पता। Classes were held for only 2 months. Only 2 months? But why? Why only 2 months? Return. Sign. Okay. You know, using this is much better. Much better. Stability. So this question is done. I'm just moving on next one, which will be POWXN. No, I'm not going to do this. Subsequence and pattern. Generate binary string without. Combination sum. You are going to start development in which tech stack? Bro, you good with PC? Yes, I'm good, all good. Do you have some kind of question with PC related question, any question? Letter combination of a phone number. सिर्फ आखिरी सम बचा है, उसके बाद लास्ट ईयर है। What did they say? Do internship in college. In college, seriously. Only by paying the fees. It's their strategy. What to do? They want you to do some kind of internship in college. Am I right? Yes, training. That, first of all, that is definitely not internship. That is called summer training or winter training, whatever this is called. But this is not an internship. It's only a training, and
this will not work as your internship will be working, because internship can be counted as a real experience, to be honest. That this guy get have some kind of industrial experience, but not training. Not training is just your regular classes focused on some kind of, like one tech stack. It can be one stack or anything, whatever you choose depends on you. How to do internships? Start searching for internships. Go look for internships. There are companies that, companies have some kind of criteria that they need to give internships to students. Yeah, some companies have them, not some, I would say mostly, because it's important due to some kind of government rule, which even I'm not sure about. Why my PC is making weird sound like a glitch when I watch video? Operating system Windows होगा. Criteria prerequisites of any. ये कैसा क्राइटेरिया मतलब? किस चीज़ का क्राइटेरिया? नहीं, इंटर्नशिप के लिए कोई क्राइटेरिया थोड़ी होता है, मतलब वो तो ऐसा है, तुम उन्हें ही पता है, बिल्कुल बच्चे हैं जिनका फाइनल ईयर भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 2-2 महीने की इंटर्नशिप पे आते, तो उनको इतना एक्सपेक्ट नहीं करते, बेसिक चीज़ें चाहिए होती है, जॉब टाइप आई गेस, जॉब की तरह इंटरव्यू होता है उनका भी शायद, छोटा मोटा पूछते हैं कि हाँ बंदे को क्या आता है क्या नहीं, और तुम बस वहाँ पे 2 महीने सीखने जाते हो। अब वो पेड हो अनपेड हो उससे मतलब नहीं पड़ता, बट हाँ एक इंटर्नशिप इंटर्नशिप होती है, वैल्यू है। तो जब प्लेसमेंट में बैठोगे तो दिखता है कि हाँ भाई इस बंदे की इंटर्नशिप है, थोड़ा सा किया हुआ है, तो इम्पैक्ट पड़ता है उसका। मैंने तो देखो कॉलेज में तो नहीं की थी समर इंटर्नशिप जो होती है ना, वो तो नहीं की थी मैंने, मेरा तो डायरेक्ट प्लेसमेंट ही हुआ था। बट कर लो तो अच्छा है, काफ़ी काफ़ी बच्चे होते हैं करते हैं। अब ऑनलाइन ढूंढना चालू करो, ये प्लेटफॉर्म्स है ना जो, जितने भी प्लेटफॉर्म है नौकरी ढूंढने के लिए, तो उन पे मिल जाएगी इंटर्नशिप, कंपनी लिस्ट करती है इंटर्नशिप। स्पेस स्पेसिफिकली तुम वही देखो कि इंटर्नशिप चाहिए तुम्हें, नॉट एंट्री लेवल, नो नथिंग, ओनली इंटर्नशिप, 2 मंथ 3 मंथ जो भी हो, इंटर्नशिप जावा और मर्न, जो बढ़िया लगे भाई। अब देखो जावा और मर्न, जावा होती है कंपनियों में, जावा ज़्यादा यूज़ होती है अगर तुम प्लेसमेंट के हिसाब से देखो, ये चीज़ तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, और मर्न थोड़ा अच्छा टेक स्टैक है, लेकिन अभी तो यार हालत ऐसी चल रही है, मैं तो मुझे तो खुद ही समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं। आई क्लीन एवरी बट आई स्टिल सी टाइनी ग्लिचेस रैंडमली, मतलब वॉइस में जो किच 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 हो रही है क्या बीच बीच में? एवरीथिंग आई क्लीन एवरीथिंग। मैं तो कहूँगा पहले एक तो वायर्ड ड्यू टू स्टोरेज और नेटवर्क। अरे नहीं, ग्लिचेस ड्यू टू स्टोरेज और नेटवर्क्स कहाँ? एक तो ब्लूटूथ डिवाइस ट्राई करो, ब्लूटूथ डिवाइस में भी आ रही है क्या? एक वायर्ड डिवाइस ट्राई करो अपने पीसी में, वही डायरेक्ट वायर्ड से कनेक्ट करके, अगर दोनों में आ रही है तो भाई फिर शायद ड्राइवर का इशू में भी, हार्डवेयर वैसा, एक डायरेक्ट जो प्लगइन होता है वो डिवाइस हो जाएगा, ब्लूटूथ हो जाएगा, तभी ज़्यादा कंफर्म होगा कि हाँ दिक्कत एग्जैक्टली क्या है, या डिवाइस ही ख़राब हो जिसमें सुनो। क्या करना चाहिए? रिकर्जन पैटर्न ड्राइंग,
यार कितनी बकवास चीज़ है। कल मैंने यही तो किया था, कल परसों की बात है। टैक्स एंड क्यूज। हाँ, वीडियो खाली वीडियो में अगर मतलब डायरेक्ट ऑडियो सुन रहे हो तो उसमें नहीं आ रही। स्प्रेडशीट हैज़ नाउ मेनी प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम तो जहाँ तक मुझे लगता है इसमें 474 इसमें है, ओवरऑल जितने भी क्वेश्चन है 474 हैं। और डिफरेंट डिफरेंट शीट्स हैं, थोड़ा बहुत अपडेट किया होगा, थोड़े बहुत क्वेश्चन ऐड किए होंगे, ज़्यादा तो नहीं, बट पहले भी थे, इतने ही थे लगभग। तो वो कौन सी थी, वो एस डी ई शीट थी, हाँ एस टी वाली थी, जिसमें थोड़े ज़्यादा अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। 191 बायोमेट्री। मैं भी ना इसी को ही करता हूँ डायरेक्ट। सम ऑफ ऑल सबसेट्स given an array, top 150 restart system old method। यार पीसी वॉइस अच्छा, एक ना देखो, तुम शायद विंडोज़ पे ही होगे अगर मैं सही कह रहा हूँ तो। मेरे लिनक्स में आई थी ये दिक्कत, मैं लिनक्स यूज़ करता हूँ मोस्टली। होता क्या, जब वीएलसी खोलता था ना, वीएलसी में वीडियो भी ग्लिच होती थी और ऑडियो भी ग्लिच होती थी। तो जाके वीएलसी की मैंने सेटिंग चेंज की थी, उसमें कुछ तो मैंने, कुछ था बाय डिफ़ॉल्ट जो गड़बड़ था, वो सेटिंग्स चेंज की थी। ChatGPT, I upgraded everything, I cleaned everything। मेन इशू तो ये है ना कि हाँ उसने सारी चीज़ें क्लीन भी करके देख ली, तब भी इशू आ रहा है। इधर पे था। एज़ कम्पेयर टू नाउ इन 2020, देखो पहला पॉइंट एआई आया है तो देखो उतना मैनुअली काम करने के लिए उतने डेवलपर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब कोड लिखना इतनी बड़ी चीज़ नहीं रह गई है, एआई करके दे रहा है, ठीक है। बट स्टिल अभी भी ये नहीं है कि डेवलपर्स की जॉब खत्म हुई, जॉब उनकी ख़त्म हो रही है जिनको खाली है सिर्फ कोड लिखना आता है, कि हाँ मतलब बस लिखना आता है, दिमाग लगाना नहीं, या कुछ डेवलप करना या चीज़ें सीखना और भी इन डेप्थ नॉलेज होना। यार वो हाँ, सिंपली कोड करने वाला काम ख़त्म हो चुका है लगभग। तो जॉब ना चेंज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, तो उस इवोल्यूशन के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा ना चीज़ों को। इट्स नॉट हार्डवेयर इशू, जस्ट सेटिंग इशू। मेरे जो मैं बता रहा था ना, देखो वो तो खाली सेटिंग का इशू था, वो हार्डवेयर का मे भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक मेरे को पता है कि अपने पीसी के अंदर भी साउंड कार्ड ऑलरेडी बिल्ट इन होता है। अगर बाय एनी चांस वो ख़राब हो जाए, जो कि मुझे नहीं लगता, तो भी आ सकता है इशू। एंड हाँ, तो मैं जो बता रहा था ना एआई का, पहली बात तो जॉब उनकी ख़त्म हुई है जिन्हें खाली कोड करना आता है। दूसरा, अब जॉब में चेंज ये है कि पहली बात तो तुम्हें अच्छे से थोड़ा एआई का आना चाहिए, एआई कैसे यूज़ करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है अपने काम में। खाली वो नहीं, चैट जीपीटी पे लिख दिया बिल्ड दिस, उसने करके दे दिया, वो नहीं, और प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझ आना है, एमसीपी ये सब
और भी टर्म्स हैं जो कि एआई यूज़ करने वालों को आनी चाहिए। और थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन भी अब कंपनी की ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जॉब के नंबर कम हो चुके हैं लेकिन जॉब ख़त्म नहीं हो रही है। इस हिसाब से एक सेकेंड यार, मेरे हिसाब से तो ये देखो, अभी भी करो, लगे रहो जो भी कर रहे हो, लेकिन थोड़ा एआई को साथ में लेके चलना पड़ेगा, उसके साथ अपडेट रहना पड़ेगा तुम्हें एआई से कैसे करना है चीज़ों को ना। अगर खाली तुम बहुत ही एकदम प्योर वैसे काम में जाओगे ना कि एक वेबसाइट बनानी आ गई है तुम्हें, सो अभी वो चीज़ इतनी ट्रेंड में नहीं है, तुम्हारी जॉब खतरे में जाएगी अगर तुम खाली उसको लेके देखोगे। ऑल्सो बैकअप ऑप्शन, बाकी बीटेक वालों का तो भाई बैकअप ऑप्शन तुम्हें पता ही है, चाय का ठेला खोल लो, पकौड़ी वकौड़ी बेच लो, कहीं पे पान की दुकान खोल के बैठ जाओ। बीटेक वालों के लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है। तुम्हारा क्या बैकअप ऑप्शन है तुम्हारा? तुम बताओ। एक चीज़ और होती है रेज्यूमे, अब तुम देखोगे ना, तुम एक एचआर, खुद को एचआर की तरह महसूस करो, तुम एक एचआर हो, ठीक है, बीटेक एग्रीकल्चर वाला भाई बीटेक वाले कहाँ नहीं मिलते, तुम ये बताओ, बैंकिंग में बीटेक वाले मिलेंगे भाई, तुम गवर्नमेंट की तैयारी में चले हो वहाँ इंजीनियर मिलेंगे, तुम्हें हर फील्ड में इंजीनियर मिलेंगे। अभी मुझे नहीं लगता कि मेडिकल में जाते होंगे, बिकॉज इंजीनियर्स आई गेस मेडिकल इतना पसंद नहीं करते, तो वहाँ नहीं जाते होंगे। बट बाकी जो भी फील्ड है भाई, आईएएस इंजीनियर सबसे पहले जाएंगे, सबसे पहले भाई, तेरा भाई से इंजीनियरिंग नहीं हुई अब आईएएस बनेगा, हर जगह मिलेंगे। हम्म, हाँ तो मैं ये कह रहा था ना, जैसे अब तुम खुद को भाई एचआर समझो किसी कंपनी के, अब तुम्हें बंदा रिक्रूट करना है, ठीक है, तुम्हें मिले हैं रेज्यूमे, तुम्हें मिले 1000 रेज्यूमे। अब तुम फ्रेशर के लेवल पे देखो, अगर फ्रेशर के लेवल पे तुम फ्रेशर हो, मैं फ्रेशर हूँ, हम सब ने रेज्यूमे दिया है भाई, सबका रेज्यूमे सेम दिखता है, सबका रेज्यूमे। तुम ये बता दो तुमने क्या तीर मारा है, मैं अभी अपना दिखा दूँ, मैं सही बता रहा हूँ भाई, मेरा भी कोई खास नहीं है कि मैं अलग दिखा दूँ। सब फ्रेशर का रेज्यूमे एक जैसा दिखता है, सब ने वही सी प्लस प्लस पाइथन जावा पढ़ी होती है, सब ने प्रोजेक्ट बनाए होते हैं, क्लोन रहता है किसी न किसी चीज़ का, या कोई क्रेड ऑपरेशन या कुछ इस टाइप के, कोई वेबसाइट बनाई है, या कुछ कुछ बहुत ही ना ऐसा अनोखा नहीं किया होता कि रिक्रूटर ने देखा और भाई चौंक गया, अरे इस बंदे को ये भी आता है भाई, ये बंदा काम का है, ये मैं लूँगा अपनी कंपनी में। वो रेज्यूमे बहुत कम होते हैं, तो भाई उनकी सिलेक्शन की चांस थोड़ी ज़्यादा होती है। बाकी तो जो भी लगा रखा है एक नॉर्मल रेज्यूमे होता है, तो सब वैसे ही दिखते हैं भाई। अब रेज्यूमे खुद ही बोलते हैं कि भाई अब बताएं इनमें से क्या क्या बंदा छाटूं, सबका रेज्यूमे एक जैसा ही है, मतलब कोई स्पेशल नहीं दिखता ना। अब कोई बहुत ही झूठ मूठ लिखा है, तीर मार दिया, तो भाई बात अलग है, तो अलग दिखाना पड़ता है। 2 साल से वही है, बहुत बढ़िया, बैकग्राउंड ऑफ अप्लॉज, अपडेट करना भी मत, अब कोई फ़ायदा नहीं है। अरे कुछ ना है भाई, करो भाई करो, अपडेट करो रेज्यूमे, और जॉब अप्लाई ट्राई मारो यार, अभी जाओ खोलो अपना लिंक्डइन, नौकरी.com, कुछ तो देखो। अभी हम खोलते हैं नौकरी.com, क्या है यहाँ पर, जॉब्स। अरे यार मेरे को 2 से 5 साल की जॉब आ रही है, अगर मैं इनमें अप्लाई करने बैठूंगा मेरा रेज्यूमे ही सिलेक्ट नहीं होगा। ये रही 0 0 to 3 R&D इंजीनियर, अब ये क्या बोल रहा है, क्या चाहिए, एम टेक इन कंप्यूटर साइंस, पहली पत्ता साफ है, बैक, ठीक है, मर्न स्टैक 2 से 5, यार 2 से 5 की क्यों आ रही है, चलो सर्च करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर। 2 साल से वही है, उत्तर प्रदेश। 1 मिनट यार, मैंने उसका मैसेज नहीं पढ़ा, 1 मिनट 1 मिनट। वीडियो में सॉन्ग स्मूथ चलता है बट इन वीडियो समटाइम इट हैपन्स, हार्डवेयर में, अच्छा यूट्यूब में स्मूथ है तो, यार वो ना सेटिंग का इशू है, फिर हार्डवेयर का तो नहीं है। वीडियोस वैसी वीएलसी से चलाने वाली,
मुझे एग्जैक्ट बताओ, वीडियो की बात कर रहे हो और ऑडियो में भी ये दिक्कत आ रही है? अगर तुम खाली सिर्फ ऑडियो वाला गाना सुन रहे हो, अगर वीडियो देख रहे हो, जैसे वो मोबाइल में डाउनलोड, मोबाइल कह रहा हूँ सॉरी, पीसी में कोई मूवी डाउनलोड करके देख रहे हैं वीएलसी से, उसमें अगर इशू आ रहा है तो बताओ, तो शायद मैं कुछ बता सकता हूँ अभी के अभी। नो क्या है यार, मतलब थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दो क्या कहना चाह रहे हो। नो किस चीज़ को नो समझूं? अरे डिमांड तो यार बढ़ ही गई है अब ना, उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। और पता है सबसे बढ़िया है रेफरेंस। रेफरेंस इज़ द बेस्ट वे टू गेट अ जॉब। खुद से ढूंढने बैठोगे तो ढूंढते ही रह जाओगे, और वही हो गया। क्योंकि हज़ारों रेज्यूमे जाते हैं यार, कंपनी कभी कभी तुम्हारे रेज्यूमे तक नहीं पहुंचती, कभी कभी एटीएस की वजह से कैंसिल हो जाता है, और भी कई सारे फैक्टर हैं। मुझे तो लगता है आधे से ज़्यादा कंपनी भाई रेज्यूमे देखा चला डा, कुछ है ही ना भाई, कुछ है ही ना, क्या करूँ इसका। हम्म, चलो यार देखते हैं, कोई जॉब देखते हैं। अच्छा चलो कोई ना इंटर्नशिप सर्च मारते हैं, अगर देखें यहाँ पे इंटर्नशिप, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है। सिलेक्ट फ्रेशर, इंटर लोकेशन जैसे गुड़गांव, बेंगलोर भी डाल देते हैं, बेंगलोर, बांग्लादेश नहीं, बेंगलोर। और इसका भाई, एक तो कभी कभी गली में इतने कुत्ते भौंकना चालू करते हैं ना, परेशान कर देते हैं। बाकी कोडिंग चलती रहेगी। हैदराबाद, अच्छा हैदराबाद भी देखना है, चलो देख लेते हैं। एक मिनट। नोएडा दिल्ली, अरे भाई शांति शांति शांति, नोएडा डाल देते हैं। इतना एनफ है। प्रेशर के लिए क्या दे रहा है? पुलिस ब्ला 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 ब्ला। इंटर्नशिप का है कहीं भी? इंटर्नशिप 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 इंटर्नशिप, लोकेशन नहीं, एक्सपीरियंस बिल्कुल ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो पे देखना है। और भाई सबसे बढ़िया, रिमोट के चक्कर में मत पड़ना, अगर तुम पहली जॉब देख रहे हो या इंटर्नशिप देख रहे हो, रिमोट के चक्कर में मत पड़ना। कुछ नहीं सीखोगे, रद्दी भर का काम नहीं आएगा तुम्हें। अनटिल और अनलेस भाई तुम बहुत ही बड़े धुरंधर हो कि हाँ मैं तो कर दूंगा, वो बात अलग है। बट हाईली रिकमेंडेड कि ऑन, वो ऑन साइट जाके ही सीखना जो भी सीखना है। ठीक है, अब इसे देखते हैं, 0 to 1 ईयर क्या चाहिए इसको। चीने को नहीं बनाया, बैक एंड डेवलपर चाहिए, इंडस्ट्री टाइप बैंकिंग, ठीक है। कुछ डाला ही नहीं है। प्रोफिशिएंट इन ESP, अच्छा डॉट नेट का सिस्टम है इनका पूरा। VC++ ऑडियो बहुत, क्लाइंट रिक्वायरमेंट 3+ वीक्स अगो, नहीं भाई इतनी पुरानी भी नहीं चाहिए, थोड़ा पीछे। रेटिंग 1.8, नहीं बस बस हो गया, इतना बहुत है। थोड़ा सा ना और फिल्टर अच्छा कर लेते हैं, सैलरी के हिसाब से तो फिल्टर नहीं लगा सकते इंटर्नशिप के लिए। बैंकिंग वाले जावा, वो ESP वाले थे। तो अगर देखें यहाँ पे तो कंपनी टाइप, रोल कैटेगरी, सॉफ्टवेयर, डेट का फिल्टर नहीं है ना यहाँ पे। डेट का यार किस में रहता है? उसमें रहता है 3+वीक, 1 वीक, यहाँ पे देखना। फ्रेशनेस, लास्ट 30 डेज, लास्ट 7 डेज की देखते हैं।
एमसी कंपनी क्या चाहिए इनको, कॉल नंबर भी दिया हुआ है, कंपनी है भी किसी लायक। एमएनसी कंपनी लिखा है लेकिन कंपनी को कोई नाम मेंशन नहीं, कुछ नहीं, क्या पता। नहीं भाई ऐसा भी नहीं देखना है, जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर, एलपी मेंशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन है, एंड ओपनिंग वन, क्या क्या दिया हुआ है, विनफॉर्म्स ASP.NET, ये भी ASP.NEट वाली है, एक्सपोजर टू एजाइल मेथोडोलॉजीज, नॉलेज ऑफ ई कॉमर्स डेवलपमेंट, डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, ब्ला ब्ला ब्ला। बिल्कुल एक फ्रेशर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सी शार्प वाला, ASP वाला। तो भाई तुम भी जाओ अपना ढूंढो, सिर्फ जब आई वॉच वीडियो ऑनलाइन इट हैपेंस, बट अदर थिंग्स सीम्स स्मूथ सो फार, आई थॉट इट sure I clean and replace the thermal paste, 1 month was good after. No, it's not हार्डवेयर इशू यार। अच्छा ऑनलाइन, खाली ऑनलाइन देखने पे, एक्सपीरियंस जीरो, प्रोजेक्ट बेसिक प्रोग्रामिंग, बेसिक जावा पाइथन रिएक्ट सी प्लस प्लस, ये तुम्हारा रेज्यूमे है ना। एक्सपीरियंस तो जीरो रहेगा, वो तो कंपनीज को भी पता है। प्रोजेक्ट अच्छा बना लो यार, कोई प्रोजेक्ट मतलब एक सॉलिड हो जाए जिस पे कि तुम आधा घंटा बात कर सको इंटरव्यूअर से, अगर कोई इंटरव्यू ले तुम्हारा प्रोजेक्ट देखे तो आधा घंटा तुम दोनों खुल के बात कर सको उस प्रोजेक्ट को लेके कि इस पे क्या किया है, ऐसे कैसे, और इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, सारी चीज़ें। क्योंकि खुद से बनाओगे तब ज़्यादा अच्छा है। दूसरा प्रोजेक्ट हो गया बस एक बैकअप प्रोजेक्ट, इतना इनफ है, दो प्रोजेक्ट हों ओके है, तो रेज्यूमे में दिखाने के लिए एटलीस्ट इतना अच्छा तो चाहिए। थर्मल पेस्ट, यार थर्मल पेस्ट की नहीं, थ्रॉटलिंग इशू तो नहीं होगा वो, एज अ हीटिंग का ऐसा कोई इशू नहीं होता है। खाली यूट्यूब में हो रहा है, अगर यूट्यूब में ना होता ना तो मेरे को फिर भी समझ आता। थैंक्स, नाउ कंटिन्यू सॉल्विंग, या यार अगर ऑनलाइन नहीं होता तुम्हारे वैसे VLC मीडिया प्लेयर इनमें होता ना तो मेरे को फिर भी एक बार को आइडिया था, बट ऑनलाइन का तो मैं भी नहीं कह सकता अभी कुछ। ब्राउज़र चेंज करके देखो, और PC, अगर ग्राफिक कार्ड है, ग्राफिक कार्ड में तुमने लगा रखा है HDMI या डिस्प्ले पोर्ट जो भी, एक बार उसको ना मदरबोर्ड में लगा के देख लो, ऐसे ट्राई करने के लिए, बस ट्राई करने के लिए ऐसे ही। क्यों कलेक्शन ऑफ कैंडिडेट नंबर, बट हाँ इतना मैं कह सकता हूँ हार्डवेयर इशू नेटवर्क है शायद। यार नॉट इन वाईटी, वीडियो ऑनलाइन इट हैपन्स, यार वीडियो ऑनलाइन में इट हैपन्स, इन अदर थिंग इट सीम्स स्मूथ सो फार, आई थॉट इट वाज हीट इशू। भैया देखो यूट्यूब सही चल रहा है, और चीज़ भी सही चल रही है, हार्डवेयर तो डेफिनेटली कोई इशू नहीं है। ब्राउज़र चेंज कर लो, या तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैं तो कहता हूँ री इंस्टॉल मार लो। कौन सा लैपटॉप लूँ, कौन सा लैपटॉप लूँ, अगर तुम्हें ज़्यादा ऊटपटांग चीज़ें नहीं करनी है, लिनक्स और ये सब इधर उधर डेली डेली अपना विंडोज़ उड़ाना या फालतू चीज़ें गेमिंग, तुम सीधा मैक उठा लो, कॉलेज के लिए बहुत सही है, कॉलेज लाइफ के लिए। मैक एयर, पर्सनली मुझे मैक बिल्कुल नहीं पसंद है। और वरना एटलीस्ट ना, एटलीस्ट 50-60 थाउजेंड वाले जो गेमिंग लैपटॉप आते हैं जो एंट्री लेवल होते हैं, एटलीस्ट उतना तो लेना कॉलेज के लिए, अगर तुम्हारा बजट उसमें है उतना तो एटलीस्ट चाहिए। फ्रॉम टुमारो आई विल ऑल्सो सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन लीड कोड एट मोस्ट वन। हाँ यार करो लीड कोड में भाई, करते रहो यार, हालत तो देखो मेरी भी बेकार है लीड कोड को लेके। क्वालिटी तो क्वालिटी बहुत घटिया है अभी भी मेरे कोड की, 86 क्वेश्चन की है मैंने खाली, 86, कुछ नहीं होता 86। मैक इसलिए नहीं पसंद क्योंकि मेरे को चाहिए लिनक्स, मेरे को चाहिए तबाही, मेरे को चाहिए एनवीडिया, मेरे को चाहिए गेमिंग, इसीलिए।
नहीं, वो सीधा 1 लाख वाले मैक की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ भाई सेकंड हैंड ही उठा लो, मैक की लाइफ अच्छी होती है। मैक इसलिए, अगर तुम एक एक ही प्लेटफॉर्म पे सही रहना चाहते हो, अपना बढ़िया कोडिंग करना चाहते हो बिना किसी आलतू फालतू की चीज़ के, तो मैक। अगर गेमिंग वाले बंदे हो तो भाई फिर मैक मत लेना, फिर गेमिंग लैपटॉप उठाओ। और गेमिंग लैपटॉप इसलिए भी क्योंकि अगर तुम बाई चांस एंड्रॉयड स्टूडियो सीखते हो या कोई हैवी एप्लीकेशन चलाते हो, तो भाई मैक और गेमिंग लैपटॉप ही ज़्यादा बेटर है। सेकेंड हैंड मैक, हाँ, अगर थोड़ा ज़्यादा पुराना नहीं है, एटलीस्ट पैसे बचेंगे। नहीं, बजट कितना है पहले ये भी तो पता होना चाहिए ना। तुम्हारा कितना बजट है, क्या लग रहा है, कितना मन है? न्यू एज स्कूल कैसा है? अपग्रेड से ईमेल है। यार अपग्रेड और ये सब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, देखो मैं खुद तो कभी पढ़ा नहीं, बट मैं इतना कह नहीं सकता। तो है, लोन लोन लोन। मैक में मैक में भी अब गेमिंग हो जाएगी। गेमिंग कितना कर लोगे भाई, कितनी गेमिंग कर लोगे? नहीं कर पाओगे, उसके लिए तुम्हें अच्छे वाला मैक चाहिए अगर गेमिंग करनी है, और वो भी उस लेवल पे नहीं होगी। पहली बात तो सब गेम्स नहीं मिलेंगे, बहुत कम गेम मिलेंगे। एनवीडिया का जी फोर्स आ गया, तो तुम सही बताओ, मुझे सही सही बताना। तुम एनवीडिया का जी फोर्स लिटरली तुम, भाई मैं जी फोर्स में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सही बता रहा हूँ। मेरे को सिर्फ एक चीज़ से मतलब है, अपना पर्सनल ग्राफिक कार्ड हो, खुद लगाऊं और खुद खेलूं। ना कोई सब्सक्रिप्शन, ना कोई नेटवर्क पे डिपेंडेंसी, ना कुछ। अपना ऑन ऑफलाइन गेम किया, खेलो जितना खेलना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे पर्सनली जी फोर्स बिल्कुल नहीं पसंद यार। अगर उसका प्राइस अच्छा हुआ तो वो बात अलग है। तो फिर डिपेंड भी तो करता है यार, अभी इंडिया के लिए वो निकाल दे कोई ऐसा प्लान। नहीं है भाई अफोर्डेबल इतना कि तुम हर मंथ खरीद रहे हो। मुझे बता दो प्ले स्टेशन और इनका ही पास कितने बंदे खरीदते होंगे, या कितने बंदे पैसे लगाते हैं। मस्त है भैया, PS5 के सब्सक्रिप्शन से ज़्यादा अच्छा। हाँ होगा, PS5 से तो ऑफकोर्स बेटर होगा, ये तो मैं मानता हूँ। वैसे जी फोर्स का मैंने इतना देखा नहीं, बट ऑनलाइन गेमिंग, क्लाउड गेमिंग, स्टोरी गेम्स के लिए अच्छा होगा। बट कॉम्पी गेम्स जैसे वैलो और CSGO हो गया, इनके लिए तो पता नहीं, मैं कह नहीं सकता, बट स्टिल इतना अच्छा उनके लिए तो नहीं होने वाला। IGI पबजी खेला है, फोर्टनाइट, हाँ खेला है, IGI पबजी फोर्टनाइट सब खेले हैं। 599 6 आवर पर डे 1 मंथ। महंगा है, महंगा है, सही में महंगा है इंडिया के हिसाब से। तुम्हें पता है ना भाई, अभी भी इंडिया में तुम, अगर मैं गेमिंग चैनल खोलूँ ना, अभी कोई व्यूज़ नहीं आएंगे। अगर मैं मोबाइल गेमिंग खोलूँ तो व्यूज़ आएंगे। वो तुम्हें भी पता है क्यों, क्योंकि मोस्टली मोस्टली जनता अभी वही है जो कि मोबाइल गेमिंग ही ज़्यादा प्रेफर करती है इंडिया में। गेम्स ऑफ 2000 गेम्स है, लेकिन वो तुम्हें खेलने को नहीं मिलेंगे अनटिल और अनलेस तुम्हारे वो परचेस्ड गेम है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। और तुम्हें पता है ना फिर स्टीम पे कितने बढ़िया बढ़िया गेम आते हैं, और प्राइस भी उनके। स्टीम पे हो, स्टीम पे अकाउंट बना रखा है? श्योर है? आर यू ऑन स्टीम? PS5 ले लेंगे, है ये भी सही है। 1 मिनट में म्यूट ही कर लेता हूँ, ज़्यादा हल्ला हो रहा है बाहर। डोगेश भाई की लड़ाई हो गई है। अगर तुम्हारे पास PC या लैपटॉप नहीं है, तो मैं कहूँगा सबसे पहली चीज़ जो तुम्हारे पास होनी चाहिए वो है एक लैपटॉप, और एक सही लैपटॉप। हाँ मैंने वो पूछा था यार, वो बजट बजट मैंने पूछा था। बजट कितना लेके चल रहे हो अगर लैपटॉप लेना है? नो प्रॉब्लम ऑफ साउंड।
सही लैपटॉप देखो, अगर प्रोग्रामिंग में जा रहे हो इन सब में, तो एक एटलीस्ट 50-60 वाला लैपटॉप हो तो ज़्यादा बेटर है। मिनिमम मिनिमम है। वरना काम तो देखो तुम्हारा पूरा कोडिंग का एक 20-30 हज़ार का लैपटॉप भी निकाल देगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट अगर चाहते हो तुम्हें थोड़ा ज़्यादा यूजेज है तो एक 50-60 वाला लैपटॉप ट्रेनिंग करनी है, इसलिए मैकबुक ज़्यादा सही लगा। हाँ मैकबुक है सही, मैं कह रहा हूँ। अगर तुम्हें डेली डेली लिनक्स नहीं चाहिए, हर दूसरे दिन नया डिस्ट्रो डाउनलोड कर रहे हो, गेम कर रहे हो, तो फिर मैक ले लो। अगर खाली कोडिंग तुम्हारा मेन प्रेफरेंस है तो मैक सबसे बेस्ट है। सही लैपटॉप कितने का? यार PS5 तो भाई देखो मेरा भी लेने का मन था। अब GTA 6 आ रहा है। हाउ टू कैलकुलेट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एनी रिकर्सिव फंक्शन? हाउ टू कैलकुलेट यार रिकर्जन के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो मैं भी भूल गया कैसे देखते थे। देखो रिकर्जन तो मेरा भी बहुत बेसिक लेवल पे है, अभी मैंने भी ट्राई, अभी स्टार्ट ही किया, एक ही क्वेश्चन मैंने किया अभी। लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया है वो डिपेंड करेगा। हम्म, अगर बहुत सिंपल रिकर्जन है तुम्हारा तो वो खाली तुम्हारी बिग ऑफ एन तक डिपेंड करेगा। हाँ बिग ऑफ एन। अगर मान लो तुम्हारे पास एक वेक्टर है 100 साइज़ का, n इक्वल टू 100 है तुम्हारा जो भी है साइज़, और तुम उस पर कुछ भी एक्शन जो तुम परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी तुम्हें उस पर जो भी करना है तुम रिकर्जन की मदद से कर रहे हो, तो ज़्यादा चांसेस है कि तुम, एक बेसिक उसकी बता रहा हूँ, तुम नॉर्मली रिकर्जन पे जाओगे करोगे रिकर्जन तो वो बिग ऑफ एन तक जाएगा जितनी उसकी वेक्टर की लेंथ है। ये मैं एक बेसिक ऑपरेशन बता रहा हूँ, एक नॉर्मल अगर उसका बात कर रहे हो तुम रिकर्जन की, तो बी ऑफ एन होगा। बाकी तो मुझे भी देखना पड़ेगा। नहीं लॉग एन नहीं होगा, लॉग एन नहीं होगा। लॉग तो जब होगा ना जब तुम से आधा आधा डिवाइड करते जा रहे हो। लॉग तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स में होता है, जैसे तुम्हारा क्या रहता है वो, मैं भूल गया उसको क्या बोलते हैं, इसमें तुम आधा कट करते हो फिर उसके बाद आधा आधा और बीच में डायरेक्ट वैल्यू निकालते हो। अगर वैल्यू फाइंड करनी है, एक तुम्हारा लेफ्ट पॉइंटर होता है, एक राइट होता है, फिर तुम मिड निकालते हो, फिर मिड को सेट करते हो, फिर बाद में डिवाइड डिवाइड डिवाइड। लॉग तो वहाँ पे काम आता है। भाई इन विच यू आर, यार मेरी बीटेक पास हो गई है 25। मोस्टली बाइनरी सर्च, हाँ यार बाइनरी सर्च, मैं भी तो कहूँ दिमाग से उतर गया बाइनरी सर्च। थैंक यू फॉर बताने के लिए। सी एस सी से पी एस यू का स्कोप, या सी एस सी से पी एस यू का स्कोप रहता है। पी एस यू का पावर सप्लाई यूनिट, पी एस सी सुनते ही यही दिमाग में आता है, पावर सप्लाई यूनिट। 30 से 40 तक का सेकेंड हैंड मिल रहा। सेकेंड हैंड अगर तुम्हें 30 से 40 का मैक मिल रहा है तो भाई फिर तो सही है। ज़्यादा पुराना ना हो, क्योंकि एटलीस्ट कॉलेज टाइम निकाल दे इतना बहुत है, फिर उसके बाद तो तुम दूसरा डिवाइस ले लेना, कोई बढ़िया लैपटॉप या पीसी बनाना है कुछ भी। 25 पास आउट, यस 2025 BTech. Do you have any experience? Yes, I have. I have 1 year of experience as a backend developer. Good night, Shaurya. Good night.
GTA 6 लीक्ड। GTA 6 लीक हो गया क्या? मतलब आ गया कुछ लीक उसका, है कहीं पे? ठीक है, फॉरवर्ड कट यार। कहाँ पे था, कहाँ पे था? नहीं नहीं नहीं, होम, it's a sheet, we have a STE sheet. Question, I am also 25 pass out. अरे बहुत बढ़िया। तो अभी क्या जॉब चल रही है तुम्हारी? Given a collection of candidate numbers, can this and the target number, target, find the unique combination. Sum to target each candidates 10, 1, 2, 6, 1, 5, target 8. What does that mean? Okay, candidate numbers sum to target. सबसे ज़्यादा फोर्स अराउंड 1000 कंपनीज में अप्लाई किया। तो रिस्पॉन्स आ रहे कंपनीज से, मतलब कुछ रिजेक्शन के ही आ रहे हो एटलीस्ट? 8 इंटरव्यू दिए, इस चीज़ में मुझसे आगे हो लगभग, मुझे भी इतना ही टाइम हो चुका है। देखो मेरा क्या हुआ था, मेरा कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था और मैं एज ए इंटर्न मैंने काम किया था 1 साल। तो प्रीवियस अक्टूबर में एंड हो गया था, तो उसके बाद से मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ इधर उधर अप्लाई करके। बट अभी तक मैंने इंटरव्यू भी नहीं दिया भाई, क्योंकि स्टार्टिंग के मैंने 4-5 महीने तो ढंग से अप्लाई ही नहीं किया, मैं कुछ और ही कर रहा था। तो अभी मैंने रिसेंटली ट्राई किया है, तो अभी तक तो यार मेरा तो देखो नंबर भी नहीं लगा इंटरव्यू का। तो तुम्हारा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब क्या फिर क्या हुआ 8 इंटरव्यूज़ में, क्या रहा, क्या निकल के आया कि क्यों नहीं हुआ? तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है? ट्रैक 3 स्मॉल कंपनीज एंड 1 स्टार्टअप। फिर क्या रहा, गए नहीं क्या पैकेज की वजह से या कोई रीज़न? नॉट कंटेन डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन। यार तुम्हारे पास देखो अभी एक्सपीरियंस नहीं है, तो अभी अगर जाना है अभी चले जाओ किसी कंपनी में, ज़्यादा बेटर है। एटलीस्ट कुछ एक्सपीरियंस आएगा, 1-2 साल के एक्सपीरियंस के। पता है देखो, हम जब तुम्हारा मेरा एक्सपीरियंस है ना 0 to 2 ईयर्स, हमारे एक्सपीरियंस में सबसे बुरी हालत रहती है, वो तुम्हें भी पता है। 2+ के बाद थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा होते हैं कहीं पे अच्छी जॉब लगने के, अच्छे पैकेज लगने के। बट अगर कहीं पे तुम्हें टेक स्टैक जो तुम्हें सीखना है, जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, अगर वो टेक स्टैक मिल रहा है तो वहाँ पे चले जाओ, कर लो, स्टार्ट करो, साथ साथ में अप्लाई करो, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि उन्हें अपना कॉलेज बिल्कुल यार, उसको तो हर कोई जानता है। देन अच्छा की है, फिर तो बहुत सही।
जून 25, अक्टूबर 25 कि तो तुम्हारा भी अक्टूबर से ही तुम ढूंढ रहे हो है ना? मैंने भी स्टार्टअप में किया था इंटर्नशिप, मैंने 1 साल की थी। तो मेरा जो टेक स्टैक था वो था PHP, माई सिक्वल एंड ये सब। कि तो 4-5 महीने में सीखने को तो मिल गया होगा यार अच्छा खासा। 4-5 महीने भी अच्छा टाइम होता है। कौन से कॉलेज? LPU यार, मैं LPU से पास आउट हूँ। फिर जो अपना कॉलेज में तुमने यार इंटर्नशिप करी उसके बाद मतलब वहाँ पे वो नहीं था, फुल टाइम कन्वर्जन का कोई सीन नहीं था वहाँ पे? ओनली इंटर्नशिप का था क्या? फिर मैं बैक ट्रैकिंग, बैक ट्रैकिंग सेंस बनाता है। फिर उसको पहले सॉर्ट किया जाए, सॉर्ट करने के बाद चेक किया जाए। हाँ इंटर्नशिप मैंने बोला था कि अच्छा। तो कॉलेज प्लेसमेंट तो खुद से ही निकाला था अपने, अपना कॉलेज वाला? तो यार बहुत बढ़िया। तो यार अगर जैसे तुम अप्लाई कर रहे हो, अभी तुमने बोला कि 8 इंटरव्यू दे चुके हो, तो कौन से प्लेटफॉर्म्स पर ट्राई करते हो या कैसे? क्योंकि मेरे को भी इस चीज़ की ज़रूरत है अभी। आई एम फ्रॉम Tier 1000 कॉलेज। प्रणाम है भैया आपको। समझ सकता हूँ, समझ सकता हूँ। कहाँ से किया कॉलेज तुमने? मतलब कौन सा कॉलेज? कॉम्बिनेशन सम टू सॉर्टिंग, सबसे पहले सॉर्टिंग। बैक ट्रैकिंग मैं भूल गया, मैंने पहले कभी करी थी बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग कैसे करनी है?
रिकर्जन से बैक ट्रैकिंग करनी है। रिकर्शन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। बैक ट्रैकिंग में जहाँ तक मुझे ध्यान है, मतलब जब नीचे आते रहते हैं हम, तब अगर आगे पॉसिबल पाथ नहीं है हम उसमें एंटर नहीं करते, वापस पीछे जाके सेकंड पाथ में जाते हैं। लेकिन उसका कोड या कुछ भी ना इस टाइप का भी इतना दिमाग में आ नहीं रहा, एक बार देखना ही पड़ेगा। थोड़ा सा समझना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, मीडियम पे किसी ने बढ़िया पोस्ट डाली हो तो अच्छा है। अभी इसने तो डायरेक्ट वही आंसर दिया हो उसका, कैंडिडेट और टारगेट का। नहीं भाई, पहले समझना है, समझना है, समझना है। मिस्टर एआई, टीच मी बैक ट्रैकिंग एल्गो। यार मैं रहता हूँ रुड़की उत्तराखंड में। लिंक्डइन पे हो यार तुम? लिंक्डइन लिंक्डइन लिंक्डइन। Powerful way to solve the problem. Yes. Solve all the possible using the possible password will notice. Okay. You build step by step start with it. We undo. Then we go B. Core idea. Build a solution step by step. If something goes wrong, go back and try different options. तो फिर लिंक्डइन पे ना ऐड कर लो तुम मेरे को। मैंने एक मिनट वो देता हूँ। उप्स उप्स उप्स, कमांड गलत। तुम इस पे जाके ना देखो, मेरा लिंक्डइन मिल जाएगा, और उस पे मेरे को ऐड कर लेना है अपने साथ ना। टेम्पलेट वेरी इंपॉर्टेंट। Solution, save the result. What choices? Why recursion? Hmm. Mm-hmm. Now instead of copying, modify the same variable. Same problem, but real backtracking style.
फॉलोड फॉलोड कनेक्ट कनेक्ट भेज देते ना मेरे को, फिर मैसेज आता डायरेक्ट। Tracking actual stars. How many questions have you solved on lead code? यार बहुत कम है अभी मेरे, ये देखो 80 समथिंग है। 86, जिसमें कि 46 तो मेरे खाली इजी वाले हैं, 37 मीडियम है। मैं डीएसए पे कभी इतना फोकस किया नहीं। अभी क्या ना, अभी मैंने रिसेंटली 3 लाइव की थी उसकी, बिल्डिंग C++ कंपाइलर। तो उसमें भाई थोड़ा मेरे को ना महसूस हुआ कि हाँ थोड़ा सा डीएसए आना चाहिए। अगर डीएसए आएगा तो चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा था कुछ चीज़ों में ना। डीएसए के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे फिर फील हो रहे थे कि हाँ इस टाइप के डीएसए के क्वेश्चन किए हुए हैं। तो वही चीज़ मैं सोच रहा हूँ डीएसए भी फिर इम्प्रूव किया जाए। एंड व्हाट डू यू से यार, जैसे अभी तुमने इंटरव्यू दिए हैं तो उसके हिसाब से तुम्हें क्या लगता है डीएसए इंपॉर्टेंट है इस वक्त, पास आउट होने के बाद, या मतलब डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ठीक है, अगर रिकर्जन का लिख के भी गया मैं, डीएसए पे ज़्यादा रहता है, यहाँ पे दिक्कत आ सकती है मेरे को। डीएसए इस वक्त ऐसा है, मतलब कुछ चीज़ आती है तो कर दी, नहीं आती तो मामला ख़राब है। अभी ओवरऑल इतना ठीक नहीं है, अभी भी कुछ टॉपिक्स है जिनमें गड़बड़ हो जाती है। जैसे अभी बैक ट्रैकिंग में किया है, बल्कि मैंने एक बार किया भी था, लेकिन अब दिमाग से उतर गया, काफ़ी टाइम हो गया। स्क्रॉल ही किए जा रहा हूँ, समझ में कुछ आए भी। ट्री कॉम्बिनेशन 1 भी तो है। कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन सम ये रहा। लीड कोड लीड कोड लीड कोड। सेकेंड है, पहले फर्स्ट वाले देखते हैं। कोई बात नहीं भाई, बने रहो, हो जाएगा। बस वही ट्राई कर रहे हैं यार, बने रहें कुछ तो। You can use multiple times. 7 is a candidate.
मल्टीपल टाइम भी यूज़ कर सकते हैं हम। हम्म, हम्म, it is the same number which you may return the combination with the choose। इसमें सॉर्टेड फॉर्म में आ रहा है क्या? Return the combination the same number must be chosen from the in unlimited number of times the two combinations are unique in frequency, at least one of them and chosen number is different. The target is less than 150 combination of the given input, candidate length, ठीक है, all element of candidates are distinct, बहुत बढ़िया। सॉर्टेड होंगे नहीं होंगे उसकी गारंटी नहीं है। आप कोई डीएससी की प्लेलिस्ट फॉलो करते हो? हाँ, अगर मेरे को यूट्यूब पे वीडियो देखनी होती है तो मैं स्ट्राइवर की देख लेता हूँ, नहीं तो मैं स्ट्राइवर की शीट फॉलो करके क्वेश्चन करता रहता हूँ खुद से। ये देखो स्ट्राइवर की शीट्स है ना, डीएसए शीट ए टू जेड हो गई, एसटी शीट हो गई, बढ़िया क्वेश्चन है यार इसमें, तुम भी ट्राई कर सकते हो। नहीं नहीं, रिकर्जन के थ्रू टारगेट सम अगर नहीं होता है, वाइड रखूँ क्या रखूँ? नहीं यार, बैक ट्रैकिंग दिमाग ख़राब कर रही है, ये भी वही सेम। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? नहीं भाई, मुझे एक क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन तो मुझे डायरेक्ट देखना ही पड़ेगा। How can we solve this question with backtracking? Don't tell me the answer. And need to understand backtracking.
बहुत सही। Build incrementally, you maintain a current combination path. Remaining target current है, ये remaining target है. Take 2, take 3, take 6, take 7. 2, 2, stopping point. 1. Found a valid combination. Remaining 0. You store the current path. Invalid path. Stop exploring this branch. ठीक है ठीक है ठीक है. Why same index matters? This is most important. You can reuse the same number unlimited times. बिल्कुल. So when you pick 2, you don't move forward. You stay at the same index. That's how 2 to 3 becomes possible. The backtracking step. Idea 4. Where most beginners get confused. Choose a number, add to path. Because undo the choice, remove the last element. So लिफ्ट में नंबर ऐड करते जाऊंगा. अगर वो पाथ सही नहीं है तो बैक ट्रैक. लिटरली द बैक ट्रैकिंग. Simulate mentally. Here 0, we pick 2, target 5, we pick 2 again, target 3, 2 again, target 1, 2 big, eventually backtrack to 2, then we try 2, 3, target complete. This problem follows a template. Loop through choices, make a choice, recurse, undo the choice. Now give me a basic question and action for backtracking. It should not give me the answer to the question which is given above, but example. Number 1, 2, 3. Generate all subset. This is foundational backtracking. ठीक है. For backtracking at every step, take the element or skip it. You have 2 choices. अच्छे एक तरीके से वो भी सबसेट बनाना ही हो गया, लेकिन जिसका टारगेट आ जाएगा उसको स्टोर कर देंगे, नहीं तो आगे चल देंगे. सबसेट निकालने के लिए पूरा डीप तक जाएंगे. हर एक आंसर कंसिडर करेंगे. लेट्स सिमुलेट अ बेट. करंट खाली है, इंडेक्स 0 है. ठीक है. बैकट्रैकिंग 1 जाएंगे, 1 2 जाएंगे, 1 3 जाएंगे. बैक ट्रैक 1 2 हो गया. लेट्स ट्राई 3. अब मुझे कॉपी पेन की भी ज़रूरत पड़ेगी.
मैं कह रहा था ना, मैंने बैक ट्रैकिंग की हुई है, काफ़ी दिन हुए। ये रही, की है मैंने, लेकिन अब वो दिमाग से उड़ चुकी है। लेफ्ट मैंने किया था। बैक ट्रैक, बैक ट्रैक। नम्स एंड करंट एंड रिजल्ट। रिजल्ट तो हमारे सारे हो गए, सबसेट जो इसने डाले हैं। करंट हमारा चल रहा है, ठीक है। नम्स भी पास करना है। ज़ीरो हमारा इंडेक्स होना चाहिए। इंडेक्स हो गया। सब कुछ बाय रेफरेंस है, बिल्कुल सही। रिजल्ट डॉट पुश बैक करंट फॉर आई। व्हाट द फक इज दिस यार। लूप के थ्रू नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये है रिकर्जन है फॉर आई इंडेक्स। पुश बैक पहले एलिमेंट अगर मैं इंसर्ट करूँगा, ठीक है, पर आई इंडेक्स डॉट साइज, ठीक है, करंट डॉट पुश बैक। डॉट पुश बैक नाम सो है। बैक ट्रैक करंट हो गया। वन से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन किधर 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 है? सबसेट्स, ये वाला क्वेश्चन मैंने किया था। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? प्रीवियस टाइम मैंने ये किया था जावा में, जब क्वेश्चन था 123, इसके सबसेट निकालने थे सारे ऑफ यूनिक एलिमेंट। 1 2, बट 2 1 नहीं है,
क्योंकि सेम थिंग है, यूनिक एलिमेंट। Solution must not contain duplicate subset. सबसे पहले था 123, greater than path num dot I, पहला एलिमेंट डाला था, देन सबसेट I+1 nums I+1 पार्ट डॉट रिमूव, यहाँ पे हम रिमूव कर रहे थे, रिमूव पार्ट डॉट साइज -1। पाथ क्या था हमारा, लिस्ट ऑफ इंटीजर, लिस्ट ऑफ इंटीजर। जब सबसे पहले पाथ में जाएगा तब हमारे पास नम्स में क्या रहेगा, इंट नम्स, जो कि खाली 123 है, ये तो हमेशा सेम रहेगा। देन वी हैव इंडेक्स, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। हम्म if I is greater than equal to nums dot length, तो यहीं पे हम सब डॉट ऐड न्यू लिस्ट पाथ रिटर्न, पाथ क्वेरी भेजा था। टीचर क्या है, 0, इस लिमिट में है तो पाथ डॉट ऐड, पाथ में ऐड किया है नम्स आई 1, then we get into this again, we added 2, then we added 3, 1 2 3, तीन एलिमेंट ऐड किए हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आएगा, उससे पहले जाएगा बैक ट्रैक, यहाँ से हो रहा है, रिमूव किया, देन 1 2 के बाद आगे गया सीधा 3 पे, यानी कि यहाँ पे 1 2 3 के बाद 1 2, फिर यहाँ पे आ रहा है सब डॉट ऐड, न्यू एरे लिस्ट पाथ, पाथ हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं अगर आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ। बैक ट्रैक, ठीक है। अब इस वाली चीज़ को देख के थोड़ा सा दिमाग में घंटी बजी है, क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन था कॉम्बिनेशन सम,
अगर मैं इस वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी सिमिलर अप्रोच लगाता हूँ तो वी हैव 2 3 6 एंड 7। अब ये जाएगा लेवल 0 से लेवल 1। लेवल 1 पे क्या होगा, 2 कैच करेगा, इंडेक्स 0। टारगेट सम से कम है तो इंडेक्स 0 ही रहेगा, नेक्स्ट में भी 2 2। टारगेट सम से कम है तो भी 0 ही रहेगा। देन वी हैव 2 2 एंड 2। फिर भी टारगेट सम से कम है, उसके बाद जाएगा 2 2 2। ज़्यादा हो रहा है तो बैक ट्रैक के बाद जाएगा 1 पे, 2 देन 3। टारगेट सम आंसर इनपुट, देन वी गो 3, देन वी गो बैक ट्रैक अगेन, इधर 2 2 3। टारगेट सम मिल रहा है, नहीं मिल रहा। देन वी गो इनसाइड 2 2 3 3। टारगेट सम नहीं मिला, बैक ट्रैक। ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हुई है दिमाग में। अब सोल्यूशन, कॉम्बिनेशन सम मैं बनाऊंगा एक वाइड टाइप का, वाइड सिंपल रिकर्जन इसका नाम रहेगा। कॉम्बो सम रख देता हूँ, अच्छा लगेगा। नोप, तो कॉम्बो सम के अंदर किस किस की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। सबसे पहले इंटीजर है विच विल बी माय इंडेक्स, and then I need to pass the vector of candidates, vector of candidates can, and then we need a path मैं जिसको बोलूँगा vector int path, then we need a target sum int target, और भी कुछ है, टारगेट वैल्यू है, पाथ वैल्यू है, और हमारा कैंडिडेट वैल्यू है। ये मैंने क्या किया, it is the wrong way of doing this, it will be, and टारगेट वैल्यू ऐसे ही पास कर देंगे, इंटीजर वैल्यू भी ऐसे ही पास कर देंगे, बिल्कुल सही है। सबसे पहले ये वेक्टर नहीं, ज़रूरत नहीं है, vector int which will be path and will be empty. So we are going to call the combo function, combo sum, and we also need an additional vector which is going to store my result. Vector int, it will be a vector int, yes, it will be a vector int which is going to store the path. It will be result, yes, vector result. Then we have combo sum which I'm going to call, and we have int which will be 0 from start. Then we have candidates, we have a path, then we have target. I'm going to just go and start.
So we have result pass by reference, and here we have a target, then we have a result. So this will start the recursion function. Now inside the function, the first thing that I'm going to check is if I is mm, is greater than or equal to length of candidates, can dot size, then we are going to return return. Also inside this, if no, I will do it before this. If the path target, if the target value is equal to 0, I'm going to minus all these things. So if your target is equal to 0, then I'm going to store the path inside result dot pushback, which will be path, and then we are going to check the return statement. Yeah, then we can check return else. So I'm just going to push back path dot pushback I, no, candidate I. Is this a right answer? Am I going to push candidate I? Yes, I am. I don't want to change anything, so I guess I can keep it normal because I don't want to change anything inside candidate. This will be the thing. I did push back, but now after this, target value will be subtracted. Minus equal to target minus what can I. So the first thing will be, if my vector is starting with value 2, then I go check, is the target 0? No, target value is target, which is 8 for 8. No, it's going to 7, which is 7 for now. So it's not 0, then I'm not going to push back any path. If I is greater than, no, I is not greater than or equal to can size, so I'm not going to return. I'm going to push back to, I'm going to subtract the value from 7, which will be 5 now. So my target is going to be 5. I need to keep track. So my target value gets 5. Integer is
Okay, no sound, no sound, no sound. हेलो 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 यार माइक देखो काम कर रहा है. आई डोंट थिंक साउंड नहीं आ रही होगी. चैट अगर और भी कोई है तो बता सकते हो साउंड आ रही है या नहीं. हेलो. हेलो. नो इट्स ओके यार. माइक इज वर्किंग. मिस्टर जे, माइक इज वर्किंग आई थिंक. So the thing is, I I changed the value of target, which is good, which is good. You know what? I'm going to keep it on the upper side. Then I'm going to call this function again combo sum. Target is target. I'm just going to keep it simple. I'm going to give it a name T. Target. So I'm just going to cut it. I have target, I have I. Then I need to give the value of I. I will be I plus 1. Then the next thing is can, which will be the same value. I will use reference. I don't want to copy it every time. So we have path. Now I'm also going to pass the path same, and then the result also result. Till now I don't think there is an issue. Target sum. We go to 2 2 2 2. Then I again try to push 2, which is I is greater than or equal to size. I'm just going to return. No. Target value is 0. Then we're going to push is 0. That means if, for example, if there is target value 8, then I can have 4 2. No issue. Then I'm going to push back. Then I'm going to return I value. I'm not going to push I plus 1. If now this is the most tricky part.
when I need to increment I. I need to increment I only when should I pass this as reference so that I can manipulate it from anywhere in the code. Let's just take I plus 1 for example, and if I will do combo sum, I will keep going down this level 2 2 2 2 2. If I need to backtrack, I will just go back, I will return. It's not 0, it's not going to push back, it's just going to return. That means my I value is still 2 or whatever it is. Then I'm going to do is I plus 1 here, I plus 1, so we can path and result. Yeah, and before this, I'm going to, what I'm going to do, can I value, I need to remove the value, and also move it. So then push back, push back, push back, push back. What was the method for removing last element remove vector? Just pop back, my bad. Then I'm going to do path dot pop back, which is okay. I'm going to pop back. Can I, if I pushed it, push back, it will be pop back. Also, I'm going to plus that element target plus equal to the pop back that I did, which was, if it was 2, then I'm going to add back 2. Is it correct? Yeah, it is. Then I can just simply return that result will be result. My bad, it will be return result. We are going to push back, else we are going to return.
It's not going to stuck anywhere. We can try. Now what is the error? I forgot to close this one. And is there any other issue? Like on this line. And I also have a issue on 27 line. No, it was same. Vector line 5. Same issue. So now what's wrong? Target, oh, I forgot after changing the name, change it here. Now t is equal to 0. I still have target this side, target there also. I'm going to keep it t, and it's all right. Candidate via path results. What dot pop back? No argument. Oh. Now the issue is that I'm going out of bounds somewhere, for which I'm not sure. Greater than equal to can size. It's going to return. We have this. I'm just pushing back in paths. It's always going to be empty. Empty vector. It's going to push back. It's not going to create an issue. It's greater than equal to. It's greater than. If it is not greater than, I can just do this. I can push back on. Let's take example. If it is not equal to size -1, I guess. Still some kind of issue, which is solution combo sum. This condition is wrong. I will just keep it -1 only. There's no issue with this condition. What if t becomes negative? I'm not doing anything. Okay. If not, I'm going to add that condition to here, or t is negative. T is greater than, oh,
less than 0, which means t is negative. Then we are going to return the code is working. No, it's not. So what's the issue? So I'm only having these output is all these values. Just repeating it multiple times, which I don't know why I am repeating this multiple times. The answer is somewhat correct, but I'm repeating it multiple times. What does that mean? Where did I go wrong? What I did wrong? The result is 0. Pushback. Okay, if we did push back, then also we can return. There's no need to stay there. We can return. Okay, done. It's 36%. That means my code is a piece of shit. But at least it works. And I got the idea how backtracking exactly works in other questions also. So it's time for the second question for backtracking. Where is this driver sheet? Combination sum. Done. Now it's time for combination sum 2. Combination sum 2. Where are you? Combination sum 2. So I did these 2-3 questions, and that is enough for today. At least for me. I am happy. This content. So that is okay, and this much is enough for today. I'm done with today's DSA questions, and I enjoyed doing recursion. So okay guys, it's time to say goodbye. See you guys in another live stream. Bye bye, tata.